Good morning, Manus. Good morning, ma'am. Let's wait for 5 minutes for everybody to join, then we'll start the class. Okay? Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Suti. I think we have discussed a chapter completely. We have to go ahead with the question answers now, right? We have completed the chapter now, or is something left? Thanks. Not completed. So let's start with the question answers now. Short question answers we have done or not? No, ma'am. Shall Let's begin with the short question answers. Question number one is, which is the largest desert in the world? Excuse me, ma'am. We have done. Ma'am, we have done one history question answer. Okay, sorry. History chapter sent to could you please send me the PDF of the history chapter? Have anyone sent me before? Ma'am, Arsal has sent on the unofficial group. Okay, thank you. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, actually, the Bhakti movement and its chief reforms we have to read from here. Bhakti movement and reforms. Reform. Yes, ma'am. Okay, let's get started then. Read, Stuti. The Bhakti movement and its reformers. Bhakti means devotion or love to God. It stressed the union of individuals with God. According to them, with love or devotion, one could get salvation. That is, union with God. One should love or without any
distinction of caste, creed, or sect. The, uh, the saints of Bhakti movement were least interested in the religious rituals. Uh, ma'am, what is written there? Pilgrimages. Pilgrimages to holy places and rivers. Uh, they wanted the people to live a virtuous life and develop tolerance and respect for other religion. Ramanuja, Ramanda, Kabir, Namveda, Guru Nanak Dev, Val, Valbhat, ma'am, what is it? Vallabhacharya. Vallabhacharya, Chaitanya, and Mirabai were some of the great reformers of the Bhakti movement. ओके, सो भक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड, राइट? इधर लव और डिवोशन टू गॉड। एंड भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बड़े बड़े रिचुअल्स करोगे तभी जाके यू कैन इम्प्रेस गॉड, नो, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्स, right, you could reach God or salvation with just pure love or devotion, right? वो उसके उससे फिर किसी को भी salvation मिल सकता है, which means union with God. Salvation का मतलब क्या होता है? Union with God. Like one could meet God but having pure intentions. ऐसा नहीं कि आप जा तो रोज सुबह मंदिर है, पूरे पूरे मंदिर में जाके बैठ रहे हो बट आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है, आप किसी का गलत कर रहे हो, then you cannot reach God. You can reach God with pure devotion and love, right? And उससे उन्होंने कहा कि भाई, like they were also against the religious like rituals or pilgrimage. Rituals मतलब जो महंगे महंगे यज्ञ कराते हैं, ऐसा हवन करो तो भगवान खुश होंगे, तब भगवान खुश होंगे, बोले ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस ट्रिप्स, जैसे कि अगर आप कहाँ जाते हो, अगर आप वहां जा रहे हो, वैष्णो देवी, अयोध्या, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? रिलीजियस ट्रिप्स या पिलग्रिमेजेस कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं है वहां पे जाने की, आप वहां जाए बिना ही भगवान को खुश कर सकते हो बाय जस्ट कीपिंग योर डीड्स गुड, राइट? वो चाहते कि जो लोग हैं वो एक अच्छी लाइफ जिए जहाँ पे वो टॉलरेंस रखें, यानी कि हर किसी रिलीजन को टॉलरेट करें, हर किसी कास्ट को रिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं कि अपने आप को सुपीरियर डिक्लेयर कर दें। रामानुजा, रामानंद, कबीर, नामदेव, गुरु नानक देव जी, वल्लभाचार्य, these are some of the great reformers of the भक्ति मूवमेंट। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है? चलिए मानस, रीड अबाउट रामानुजा। Ma'am, Ramanuja. हाँ जी। Ramanuja was born in a town near Madras in 1016 AD. He considered God to be an ocean of love and beauty. His teachings are same as found in the Upani. Ma'am, what is it in? Upanishads। And the Bhagavad Gita. He always preached in the language of the common people. He also preached the worship of Lord Vishnu. A large number of people became his followers in North India as well as in South India. ओके, Ramananda. रामानुजा की बात करते हैं पहले हम। रामानुजा जो थे, he was born in town near मद्रास, राइट, इट वाज इन चेन्नई। एंड उन्होंने उनके लगता था कि भगवान जो है, मतलब ही हैज नो एंड, मतलब उनका मानना था कि भगवान का कोई एंड ही नहीं है, ही इज एन ओशन, राइट? ही इज एन ओशन ऑफ ब्यूटी, ओशन ऑफ लव टू गॉड, right? And then he said that his teachings were same as found in, जो वो सिखाते थे वो वही चीजें थी जो कि उपनिषद्स में और गीता में आपको लिखी मिलेगी। उन्होंने कुछ भी अलग नहीं बताया लोगों को, ठीक है? जैसे पहले के प्रीस्ट होते थे जो अपनी बातें अलग अलग कहते, नो, ही जस्ट कोटेड एग्जैक्ट थिंग्स व्हिच वर रिटन इन द उपनिषद्स और गीता, है ना? उनका मानना था कि देखो, ही wanted टू प्रीच, अगर वो अपने कोई लेक्चर्स देते थे, प्रीचिंग्स देते थे, यानी कि रिलीजियस सरमन्स देते थे, लेक्चर्स देते थे,
वो लोगों की कॉमन लैंग्वेज में ही देते थे, सो दैट लोगों को समझ में तो आए वो क्या बताना चाह रहे हैं, rather than teaching in संस्कृत और any such languages जो local people did not understand. ऐसा नहीं करते थे वो. ठीक है. And he has also preached, he also preached Lord Vishnu को प्रे करते थे, प्रीच करते थे. ठीक है, उनको मानना था कि, but he did not force others to do the same. ऐसा नहीं कि दूसरे ने नहीं करने के लिए फोर्स किया. नो. ओके. चलो, नेक्स्ट इज रामानंद. अथर्व सिंह, रीड. Ramananda was a follower of Ramanuja. He अथर्व was सिंह, your born voice is at coming very low. Allahabad. Ramananda was a follower of Ramanuja. He was born at Allahabad, Prayagraj, in a South Indian family. Although he belonged to the South, yet he propagated his thoughts in the northern parts of India. He wanted Hindu society to get rid of this bad custom and rigid caste system. So he taught his principles of bhakti to all the four castes. He preached the worship of Rama instead of Vishnu in Hindi language for the first time. One of his disciples was Kabir. ओके, सो रामानंद Kabir जो थे, कबीर जी के, कबीर को हम सब जानते हैं. वी ऑल नो कबीर दास जी, राइट. सो ही वॉज द गुरु ऑफ कबीर दास जी, एंड ही वॉज अ वे फॉलोअर ऑफ रामानुजा, राइट. इनके गुरु जो थे वो रामानुजा थे, और ये किसके गुरु थे? Ma'am, Kabir Das. कबीर दास, राइट. सो ही वॉज born at Allahabad, which is named as what now? Ma'am, Prayagraj. And Prayag, Prayagraj. right, which is named as Prayagraj now, right. What is going to happen in Prayagraj? Ma'am, Mahakumbh Mela. राइट. सो अब, डू यू थिंक अगर ये भक्ति सेंस होते आज, तो क्या ये आपसे कहते हैं कि नहीं, महाकुंभ में जाना बहुत जरूरी है और तभी आपको सैल्वेशन मिल पाएगा, और दे वुड हैव सेड नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड? व्हाट डू यू थिंक? आप बताओ. अगर आज ये भक्ति सेंस होते, सो व्हाट वुड हैव बीन देयर ओपिनियन? वुड दे हैव टोल्ड यू टू गो टू द महाकुंभ, और दे हैव टोल्ड यू नो, बी एट योर होम, डू गुड थिंग्स, एंड you'll get the blessings of the god like that only? Ma'am, sit at home and ma'am, you will get blessed. एग्जैक्टली, है ना. सो इनका भी था क्या, ऑल्दो ही बिलोंग टू साउथ, राइट, बट ही प्रोपगेटेड हिज थॉट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. वैसे साउथ में बॉर्न हुए थे, बट ये अपने थॉट्स नॉर्थ में लोगों को प्रोवाइड कराए. ही वांटेड हिंदू सोसाइटी कि उसमें जितने भी बैड कस्टम्स हैं, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, सब जो कस्टम्स हैं खत्म हो, है ना. एंड ही थॉट हिज प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति. ठीक है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल जो थे भक्ति के, सारे फोर कास्ट्स को बताया, चाहे वो अपर कास्ट हो, लाइक ब्राह्मण्स हो, क्षत्रियास हो, शूद्रास हो, राइट. ही प्रीच्ड इन द वर्शिप ऑफ रामा, द वर्शिप ऑफ रामा इंस्टेड ऑफ विष्णु. ये विष्णु की जगह राम जी को प्रे करते थे. एंड इन हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने हिंदी लैंग्वेज में प्रीच करना स्टार्ट किया. और जो इनके डिसिपल थे, उनका नाम क्या था? कबीर दास. लेट्स लाइक टॉक अबाउट कबीर. आयुष्मान सक्सेना, रीड अबाउट कबीर. What, ma'am? Read about Kabir Das. Kabir was a weaver by profession. He tried to become a bridge between the Hindus and the Muslims. Thus, he did not believe in the distinction of caste and creed. According to him, everyone is the child of the same God. Hindus call him as Ishwar and Muslim as Allah. He
say that not by caste but by deeds, a man could achieve salvation, and he fought against outward religion practices, example, idol worship, useless rites, and supremacy of priests. He laid stress on good deeds and purity of conduct. His uh, what is it? Hmm. What is this? His couplets का मतलब दोहे. Are still reside in India. He died at constructing side by side. This follower started a new sect called Kabir He Panth. died at Mahagar, where his samadhi and maqbara are constructed side by side. Okay, right. So if we talk about Kabir ji, now Kabir was a weaver by profession. By profession क्या करते थे? ये वीविंग करते थे. उन्होंने कोशिश करी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो गैप है, राइट, जो डिफरेंसेस आ गए हैं, उनको खत्म कर पाए, कम कर पाए. दैट इज व्हाई ही डिडंट बिलीव इन द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड creed. ये कास्ट क्रीड रिलीजन सब में नहीं मानते थे. इनका मानना था सबका हमारे एक है, गॉड इज वन, राइट, लाइक जस्ट लाइक गुरु नानक देव जी. अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन इज अ चाइल्ड ऑफ द सेम गॉड, एंड हिंदूज कॉल हिम ईश्वर whereas Muslims call him Allah. They said it is the same God, it's just we have given him the different names. जैसे हिंदूज ईश्वर और मुस्लिम्स अल्लाह कह रहे हैं, वो एक ही भगवान है. ठीक है. He said that not it is not by caste, but it is by the deeds that a man could achieve salvation. आप अपनी कास्ट के थ्रू salvation कभी अचीव नहीं करोगे. आपका कर्मा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग you will, no, you will get that salvation. And he fought against outward religious practice, idol worship, useless rites, supremacy of priest. इन सब के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, सब चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए. फाइट किया सोसाइटी में इनके अगेंस्ट. And he laid stress on good deeds and purity of conduct. He said, if you want to reach salvation, want to reach God, then keep your deeds good and keep your conduct pure. कुछ के लिए गलत मत सोचो, बुरा मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो. Then only you'll be able to reach God. Okay. He died at Maha, and इनके जो दोहे थे, couplets मीन्स दोहे, वो आज भी इंडिया में रिसाइट किए जाते हैं. एंड ही डाइड एट मागर, जहाँ पर इनकी समाधि और मकबरा साथ साथ बने हुए हैं. एंड हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड a new sect called कबीर पंथ. समाधि और मकबरा साथ साथ बनने का मतलब है ये दोनों ही रिलीजन को मानते थे. समाधि हिंदुओं में बनती है, मकबरा मुस्लिम से बनता है. सो इनके दोनों ही बने हुए हैं. ठीक है. ओके. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Next is Namdev. Stuti, read. Namveda. Namveda was a great Marathi saint. Naam what? Ma'am, Namveda. Ma'am, Namve. Namdev. Ma'am, Namdev. Okay. Namdev was a great Marathi saint. He was a washerman by birth. His beautiful hymns, which were composed in Hymns Marathi, का मतलब क्या होता are है? What is the meaning of hymns? HYMS, hymns. Hymns का मतलब क्या होता है? भक्ति songs. ma'am bhajan, Hmm. which were composed in Marathi, are sung by the followers, whether they are Hindus or Muslims. Right, उन्होंने जो People भजन of लिखे थे वो आज भी उनके फॉलोअर्स गाते हैं. और डजेंट मैटर कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो. His hymns are so popular that they're still sung by people. people of all castes and creed hold him in high esteem for his teachings. भी टीचर्स के लिए हर रिलीजन हर कास्ट का इंसान आज भी बहुत हाई मानता है, आज भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुरु नानक देव जी. अ क्लोजर लुक एट गुरु नानक. मानस जी पढ़िए.
A closer look at Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak was born at Talwandi uh, in 1469. He traveled widely before establishing a center at Kartarpur, Ba- Kartarpur impre- uh, irrespective Baba Nanak, irrespective of their former creed, caste, or gender. His followers ate together in the common kitchen. The scared space thus A sacred created by space. Baba, The the sacred space. sacred, the sacred space thus created by Baba Guru Nanak was born at Dharmshal. It is now Dharmshala. known as Dharmshala. Dharmshal. Okay, ma'am. It is now known as Gurudwara. Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor. His name was Bhai Lehna, but he came to be known as Guru Angad. Guru Angad compiled the compositions of Baba Nanak, to which he added his own a new script known as Gurmukhi. Gurumukhi. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan Dev in 1604. To this compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid Sant Kabir, Bhagat Namdev, and Guru Tegh Bahadur. In 1706, this compilation was authentic, authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib, the holy scripture of the Sikhs. The number of Baba Nanak's followers increased through the 16th century under his successors. They belong to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans, and craftsmen predominated. This may have something to do with Baba Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also expected to contribute to the general funds to the community of followers. By the beginning of the 7th century, the town of Ramdaspur had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib. It was virtually governing, and modern historians refer to the early 7th century Sikh, Sikh community as a state within the state. The, the Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the execution of God Arjun in 1606. Person. The Sikh Okay, stop here. Right, so as he has read that Guru Nanak, you all know who Guru Nanak is, right? He is also known as the founder of the Sikh community. You know? So he was born at Talwandi near Talwandi Nankha Sahib in Pakistan, which was earlier a part of India, in 1469. वो बहुत ट्रैवल करते ही ट्रैवल वाइडली बिफोर स्टैब्लिशिंग अ सेंटर इन करतारपुर, राइट, जिसे आज देवा बाबा बाबा नानक के नाम से जानते हैं हम, और रिवर रवि. Irrespective of their former creed, caste, or gender, his followers together were कॉमन किचन. जो आपने देखा होगा आज भी, अगर आप कभी वहां जाओ ना गुरुद्वारे में, इफ आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन और नॉट, आप गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे सब साथ में लंगर खाते हैं. चाहे कितना भी बड़ा इंसान आया हो, चाहे छोटा इंसान आया हो, दे हैव टू वॉश द डिशेज ऑन देयर ओन, राइट, एंड देन कीप इट. एंड एवरीबडी, आप बड़े बड़े गुरुद्वारे में जाओ, लोग आके खुद गुरुद्वारे को में सफाई भी कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट. सो he said that, irrespective of their former creed, caste, or gender, the followers of Guru Nanak ate together in the common kitchen, and the sacred space created by Baba Guru Nanak was known as Dharamsal, जिसे आज हम क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा. आज क्या बोलते हैं हम उन जगहों को?
Gurudwara. गुरुद्वारा, राइट। इनकी डेथ से पहले ही बाबा गुरु नानक ने अपने एक फॉलोअर को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था, राइट, जिनका नाम था गुरु अंगद। ठीक। His name was Bhai Lena, but because he had become the successor, so his name was supposed to change, and he changed his name Guru Angad. He compiled the composition of Baba Nanak. Baba Nanak की जितनी भी compositions थी, उन सबको एक साथ compile किया, to which he added his own a new script as Gurmukhi. उसमें उन्होंने अपनी नई script भी add की गुरमुखी। And the three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their writings, right, were compiled by Guru Arjan Dev in 1604. To this फिर इस कंपैरिजन में बाकियों की जो स्टेट्स, शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर सिंह जैसे लोगों की राइटिंग्स को भी ऐड किया गया। एंड 1706 ये जो कंपैरिजन ऑथेंटिकेटेड बन के आया गुरु तेग बहादुर सिंह सक्सेसर के द्वारा, उसमें उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया, and which is later known as Guru Granth Sahib, which is the holy scripture of the Sikhs. ठीक। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ोगे, उसमें आपको कबीर दास के वर्ड्स भी मिलेंगे, बाकी और रिफॉर्मर्स के भी मिलेंगे। अब बाबा नानक के जो फॉलोअर्स उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा, राइट, एंड दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट एंड ट्रेडर्स, अलग अलग कास्ट के अलग अलग ट्रेड्स के थे। सो उसमें ट्रेडर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, आर्टिशियंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, ये सब लोग ज्यादा थे, राइट। नाउ दिस may have something to do with Baba's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations, right? उनसे they were also expected to contribute to the general funds of the community of the followers। वहां पे आप जो community of followers हैं, यहाँ पे general funds भी दो। अब 17th सेंचुरी की शुरुआत में द टाउन ऑफ रामदासपुर, विच इज नोन एज अमृतसर टुडे, had developed around the central गुरुद्वारा called हरिमंदिर साहिब, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, राइट। ये जो एरिया था ये वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग था, यहाँ पर लोग खुद को खुद ही गवर्न करते थे, एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस refer to as a early 17th century or refer to as a Sikh community as a state within a state, right। ये सिख कम्युनिटी ने अपने खुद का ही एक स्टेट बना दिया, अपने खुद की गवर्नेंस करते थे लोग। फिर क्या हुआ था, मुगल एम्पायर जहांगीर को लगा कि अच्छा ये तो मेरे किंगडम के थ्रेट है, राइट। इसलिए उसने कहा कि गुरु अर्जुन देव को ये 1606 में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। फिर वहां से सिख मूवमेंट शुरू हुई, पॉलिटिकलाइज हुई, राइट, एंड the Khalsa was institution of Khalsa was started, which culminated the institution, which uh, right, a communal institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699, and the community of Sikhs called Khalsa Panth became a political entity। अब तक ये सिर्फ कम्युनिटी थी, बट टू फाइट अगेंस्ट जहांगीर इन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया जिसका नाम था खालसा पंथ। आगे पढ़िए आयुष्मान। A, num- a number of Baba Nanak's followers increased through 16th century under his successor. They belonged to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans, and craftsmen predominated. This may have something to do with Baba Nanak's uh, insistence that his followers must be householders and Ma'am, I have read this. Yeah, you have to read from the changing historical situation। the changing historical situation during the 16th and 17th century influenced ideas of Baba Nanak had a huge impact on this development from the very beginning. Uh, Ma'am, what is his name? This बहुत बेटा। Ma'am, what is this written? Where The importance of the worship of one God. emphasized, One instant he emphasized on the importance of worship। he insisted that caste, creed, or gender was irrelevant.
for attaining liberation. His idea of liberation was not yet of a state or inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. He he himself a sense of his teaching, which actually meant right worship, welfare, or other and purity of uh, Harmandir Sahib Golden Temple. It was virtually self-governing and modern historic वापस नहीं refer पढ़ना है to बेटा the बेटा 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 Purity of conduct. His teachings are now remembered as Naam Chakna, Kirt Karna, and Van Chakna. one chapter, which also underlined the importance of right belief and worship, honest living, and helping others. Thus, Baba Nanak ideas of equality had social and political implication. This might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Nanak and the history of the followers of the other religious figure of the medieval century, like Kabir, Ravidas, and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Nanak. Okay, thank you so much. हम्म तो यहाँ पे फिर से बताया गया हमें बाबा नानक जी की टीचिंग्स के बारे में. ठीक है. सो हियर दे टोल्ड अस दैट सिख मूवमेंट आई थी, शुरू हुई थी. इसमें क्या हुआ, पॉलिटिसाइज हुई. उसके बाद द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग 16 and 17 centuries, it influenced the development of the Sikh movement. जैसे जैसे पॉलिटिकल कंडीशंस बदलती गई वैसे वैसे सिख मूवमेंट भी और स्ट्रॉन्ग होती गई. दे रियलाइज वी हैव टू कीप आवर ओन बैक. हमें अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो जो बाबा नानक के आइडियाज थे उनका लोगों पे बहुत इम्पैक्ट हुआ, राइट, शुरुआत से ही. एंड ही emphasized on the importance of the worship of one God. He also used to say सबका मालिक एक, कि भाई सब एक ही है. there is only that one God. आप उस पे ध्यान दो, है ना, लड़ो मत आपस में. ये सब चीजें बताई गई. He insisted that caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation. अगर आपको salvation चाहिए, liberation चाहिए, तो आपको एक caste, creed, gender इन सब के चक्करों से बाहर निकलना चाहिए. Right? His idea was uh, of liberation was that of a state of inner bliss. लिबरेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको अंदर से खुशी मिलेगी चीजों से रिलेटेड, राइट. एंड नॉट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर and not that of a state of inert bliss, but rather a pursuit of an active life with a strong sense of social commitment. कि आपको वो खुशी तब मिलेगी जब आप एक एक्टिव लाइफ जियोगे, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करोगे. then only you'll get all that. He himself used the terms नाम, दान and इंसान for essence of his teaching. इनका मतलब होता है, नाम means right worship, दान means welfare of others, and Isnan means purity of conduct. Namdan, Isnan. These are the three teachings this stuff is known as. आज उनकी टीचिंग्स को और मॉडर्नाइज बेटर करके नाम दिया जाता है नाम जपना, कीर्त करना, वन चखना. नाम जपना मतलब उन्हें याद करता है ना, कीर्त करना मतलब कीर्तन करना, एंड वन चखना मतलब सबको लंगर खिलाना, राइट. एंड विच ऑल्सो अंडरलाइन the importance of the right belief and worship, honest living, and helping others. So that is what the religion of the Sikhs preaches. These are things you should do. That is why Baba Nanak's idea of equality had social and political implications. Thus, this might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Nanak and the history of the followers of other religious groups like Kabir, Ravidas, etc. Okay. Next, we have to cover language and literature. Can anyone of you send me the next pages?
You can send in the unofficial group. हाँ जी, परमीत, are you here? परमीत, Yes, ma'am. beta, please read from language and literature. Ma'am, which page number? Page number is 80. क्या लिखा है? पढ़ना नहीं गया। Ma'am, page number is 68. 68. पढ़िए कबीर, वो पढ़िए परमीत। कैसे बुक की फोटोज भेजा था? पलक ने फिर भी सही भेजा। पलक is there in the group? Well, she's not in the meeting, right? Parmeet, read better. Persian was the language of the administration. Louder, Parmeet, your voice is not coming at all. Persian was the language of the administration. Arabic was used mostly by the Arab traders from West Asia. Sanskrit was a language of higher learning among Hindus. The production of standard books in Sanskrit was more than before in this The कौन कौन सी period. language is prevalent थी Development उस time पे बेटा? movement led to the development of different regional languages such as Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Kannada, Telugu, and Tamil. Much of the popular literature in Sanskrit was now available in these regional languages. In some areas, regional languages were also used for administration because of long contact between the Muslims and Hindus. The Persian and Hindi language also mixed completely. This mixture gave birth to a new language called Urdu. Okay. It produced a remarkable literature later on. Persian poets like Amir Khusro and Amir Hussain Delvi wrote Subir Poverty in Persian, uh, Minhaj Siraj, Raj. and Riyauddin Uddin Birani were great historians of this period. They wrote accounts of the rulers and political events of that period. Amir Khusro was also a famous Hindi writer. Malik Muhammad uh, Jayasi was the author of Padmavat, Ramanuja, Sarthi Mishra, and Jadev were prominent Sanskrit writers of this period. Ma'am wrote, So see, he has read it all about the language literature, but this